Good morning, class. Class, write your attendance in the chat box. लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? मोहित, लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे? बच्चे, एम आई ऑडिबल? मोहित, अनम्यूट करो। यस मैम। सिद्धांशु, लास्ट क्लास में कितने बच्चे थे बच्चे? लास्ट लेक्चर मैम चेतन सर का था। कितने बच्चे थे? 27 मैम आपकी आवाज बहुत स्लो है मैम। Yes, ma'am. बच्चे, मैं तो यस वैसे मैम ही बोल आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं सुनाई दे रही। अब मैं चिल्लाऊंगी थोड़ा ना। हम सुनाई दे रही है 27 स्टूडेंट की। ओके, फाइन। We are starting with the very first chapter with the people, that is motherboard. ठीक है, एक बेसिक सा आइडिया जो मैंने ऑलरेडी दिया था, अभी भी पहले एक बेसिक सा व्यू लेंगे, ठीक है, देन आई विल बी गोइंग फॉरवर्ड। बीच में बोलना मत करो। फाइन। व्हाट इज अ मदरबोर्ड? अ मदरबोर्ड A motherboard is a large circuit board containing all the components. The components like the CPU, expansion slot, RAM slot, connectors, ports, chipsets, batteries, everything. And is also called the main board. Okay, this is the overview of a motherboard. The very first thing, this part is known as, this is a CPU, जिसकी वजह से हम पूरे के पूरे बॉक्स को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। दिस इज द प्रोसेसर और द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मैंने कल खोल के भी आपको दिखाया था। ठीक है, दीज आर द एक्सपेंशन स्लॉट्स। नेक्स्ट, दीज आर द रैम स्लॉट्स। ये देखो, रैम इंसर्टेड भी है इसमें। दीज आर द पोर्ट्स। ये कैटेगरीज में है, जैसे आपको कहा था ना कि आपको कैटेगरीज में लिखना है। एक्सपेंशन स्लॉट में ये नहीं कि आईएससी अलग लिख दोगे, पीसीआई अलग लिख दोगे, एजीपी अलग लिख दोगे, इकट्ठी कैटेगरी में आएगी। देन दीज आर द पोर्ट्स। पोर्ट्स के अंदर ही सारे पोर्ट्स आएंगे, यूएसबी हो, सीरियल हो, पैरेलल हो, ठीक है, कनेक्टर्स उसके अंदर ही। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द मदरबोर्ड। दिस इज द बेसिक व्यू। ठीक है, इसमें आपको ये सब कुछ दिख रहा है। दीज आर द बैक पैनल, जहाँ पे कनेक्टर्स, पोर्ट्स वगैरह होंगे। ठीक है, दीज आर द एक्सपेंशन स्लॉट्स, एक्सपेंशन कार्ड, ये देखो उसमें दिखाया हुआ है। देन दिस इज द सीपीयू एंड दीज आर द रैम स्लॉट्स। सीपीयू का फंक्शन अगर देखें ओवरऑल, हमने पहले भी पढ़ा है, जो बीआईटीज में पढ़ते हो, द सेम प्रोसेस होल्ड्स। इट is a part of computer that is used to control the operation of the computer. It is that part of the computer that controls all the operations. मेन काम इसी का है, जो हम कहते हैं इनपुट देते हैं। इनपुट देने से कुछ नहीं होगा, काम क्या करवाना है। अगर इनपुट से आउटपुट लेनी है, वो तो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे फैन को स्विच ऑन स्विच ऑफ किया आपने, दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इनपुट भी, आउटपुट मिल गई। ऑन है इनपुट तो आपका
फैन ऑन हो जाएगा, आपकी इनपुट ऑफ है, फैन विल बी ऑफ, ठीक है। बट फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वी एक्सपेक्ट द डिवाइस टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ फंक्शंस, दैट्स व्हाई वी टर्म इट एज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो उसमें प्रोसेसिंग चाहिए, प्रोसेसिंग डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इनपुट गिवन, ठीक है। तो इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन, दिस प्रोसेसर, दिस सीपीयू कंट्रोल ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर, it carries out the instructions and operate on them, ठीक है। पहले इंटरप्रेट करेगा, देन इट परफॉर्म सम स्पेसिफिक कैलकुलेशन, जिसको हम सीपीयू कहते हैं, एएलयू सीयू वगैरह उस सब के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट्स, इट इज द सॉकेट और द स्लॉट, ठीक है, दैट can be inserted into the motherboard. It is a socket or a slot that can be inserted to the motherboard. This slot is used to increase the capabilities of the motherboard. It is a place to fit an expansion card containing the circuit that provides some special capabilities such as video cards. कुछ special capabilities आपको चाहिए, कुछ extra capabilities आपको चाहिए, कुछ extra features आपको चाहिए, तो you need to insert an expansion card in these slots, in this socket, in these slots, ठीक है। The expansion cards, ये दिख रहे हैं आपको, cards इस फॉर्म में होते हैं, these can be inserted to expansion slots, जो आपने previously देखी है, ये expansion slots है, it is used to add new devices or capabilities to a computer. कोई नई device add करनी है, कुछ capabilities add करनी है, one at the same thing, so you can be making use of these slots, and these type of cards can only be inserted depending on the new functionalities you want for your PC or the new features you want for your PC. Next is, this is the RAM slot, okay. This slot is where we have the computer memory, also called as RAM. जो temporary memory है, we need the temporary memory, whether we will be having a secondary storage or not, but the primary storage is a necessity for the system to work. तो यहाँ पे ये RAM slots आपकी insert होती है। Next, these are the ports and the connectors. This is the back panel of the CPU. मैंने बताया था आपको, यही सारी चीजें आपको मदरबोर्ड का, this part is visible from the back side of the CPU also, ठीक है। This is a part where a computer can be connected to an external device. CPU हम मेन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही कंप्यूटर बोलते हैं, लेकिन इसके साथ रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस कनेक्ट यहीं पे आके करेंगे, तो we say the whole system behaves as a single system in which different devices are made to interact with each other, okay. The next is next I'll be starting with नेक्स्ट स्लाइड को देखें तो what is a motherboard? A motherboard is the most important component of any computer system.
every important element or the component is connected to your motherboard. It contains every other component along with it. मदरबोर्ड सिर्फ एक सिंपल इंडिविजुअल डिवाइस नहीं है, इसके साथ पूरा का पूरा कंप्यूटर कनेक्टेड है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईबीएम ने शुरू में इसको सिस्टम बोर्ड कहा या प्लानर बोर्ड कहा। ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने लॉजिक बोर्ड, जैसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है, उस तरह से लॉजिक बोर्ड कहा इसको। ठीक है, इट इज द मेन सर्किट जिसमें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट शो कनेक्टेड है, दैट इज द प्रोसेसर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट एंड कनेक्ट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरी पार्ट ऑफ द पीसी। हर चीज इसके साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ अ चिपसेट, सम कोड इन रोम एंड वेरियस इंटरकनेक्शन और बसेस। चिपसेट भी इसके अंदर है, दैट इज मेड टू इंटरैक्ट द डिफरेंट कंपोनेंट। चिपसेट में क्या है, अगर कोई भी पार्ट है उसकी वर्किंग है तो वो पार्ट कर क्या रहा है, दूसरे कंपोनेंट से इंटरैक्ट करवा रहा है बेसिकली। जैसे चिपसेट में मान लो सीरियल पोर्ट की वर्किंग है, फंक्शनैलिटीज है, तो चिपसेट इज मेड to behave the functionalities of the serial port, and that serial port is used to connect the device to the rest of the computer. तो कहने का मतलब है सारा का सारा लॉजिक जो है वो विद द हेल्प ऑफ मदरबोर्ड ही परफॉर्म हो रहा है। कुछ कोड जो रोम के पार्ट्स हैं वो भी मदरबोर्ड पे प्रेजेंट होते हैं, और सारे इंटरकनेक्शन या बसेस का रोल भी जो है मदरबोर्ड से ही स्टार्ट होता है। The different components you can categorize like expansion slots, CPU, processor, memory, BIOS, and some chipsets, ports वगैरह। वो जितने कंपोनेंट देखोगे खुद कैटेगरी इससे बनाते रहना, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट वी विल बी एक्सपेक्टिंग अ मिनिमम ऑफ 10 कंपोनेंट्स फ्रॉम यू पीपल। ठीक है, 6 को कैटेगरीज या 7 कैटेगरीज भी बन जाए ओके, बट उनके अंदर सब कैटेगरीज में आपके कम से कम 10 फंक्शन होनी चाहिए ओवरऑल। दिस इज द डायग्राम ऑफ मदरबोर्ड। मैं आपको बनाना सिखाती हूँ अभी कि कैसे हमने इसको बनाना है, प्लेसमेंट आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगर इसका बैक पैनल स्टार्ट करें, दिस इज द PS2 यूज फॉर माउस एंड कीबोर्ड, दीज आर द USB पोर्ट्स। ठीक है, दिस इज द सीरियल पोर्ट, दिस इज द पैरेलल पोर्ट, दिस इज द लैन पोर्ट, इंटरनेट पोर्ट, ऑडियो जैक, हेडफोन्स वगैरह। ठीक है, देन if I'll be going for this yellow part, then this is known as CPU socket, उसके अंदर प्रोसेसर। ठीक है, देन CPU फैन इसके ऊपर लगा होता है, हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट्स। दिस इज क्योंकि ये भी वो हीट सिंकर ही होता है ना, जैसे हीट सिंकर इसको बोलते हैं आप, नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज को, ये भी CPU फैन हीट सिंक का काम ही कर रहा है, हीट को एक्सपेल आउट कर रहा है। ठीक है, दिस इज द नॉर्थ ब्रिज एंड दिस इज द साउथ ब्रिज ओवर हियर। यहाँ पे देखो ये दिस वन, दिस इज द नॉर्थ ब्रिज विद हीट सिंक, दिस इज द साउथ ब्रिज सिंपली, उसके ऊपर वो एल्यूमिनियम वाला एलिमेंट नहीं लगा हुआ, हीट सिंकर उसको बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज इन collection termed as chipset. Then I'll be starting from here. This is the ISA slot, this is the PCI slot, and this is the AGP slot. 1 2 3 नंबर इस ऑर्डर में जाएंगे। फर्स्ट कैटेगरी अगर होगी तो ISA की होगी, आजकल ISA दिखती नहीं, ऐसे पहले ISA ही थी। ठीक है, देन फॉर द अदर एंड दिस विल बी योर डिम पार्ट, DDR मेमोरी। ठीक है, या डिम स्लॉट्स या रैम स्लॉट्स, कुछ भी कह लो। देन दिस इज अ ATX power supply, 20 pin ATX power supply, 20 to 24 it varies depending on the power supply. This is the IDE connector, integrated drive electronics connector, used to connect CDs and IDE hard disk. This is the CMOS battery over here. Okay, used to, yeah, it contains the basic functions
ठीक है, नेक्स्ट विल बी गोइंग फॉर, बस खत्म होगा सारे। हाँ, what is an expansion slot? The expansion slots are the long thin connectors on the motherboard near the back side of the computer. क्योंकि बिल्कुल बैक पैनल के साथ ही एक्सपेंशन स्लॉट का काम स्टार्ट होता है, अगर आप ऑब्जर्व करो। ये देखो, दिस इज द बैक पैनल, उसके साथ ही एक्सपेंशन स्लॉट। ठीक है, various expansion cards are connected to the motherboard through these slots. ठीक है, one can connect various expansion cards such as display card, hard drive controller card, sound card, network card, modem card, कुछ भी कह लो, with these slots. That's it. In this way we can insert an expansion card to the slot. ये लिखी हुई है उसने, ISA slots है, these are the PCI slots, this is the AGP. ISA इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर, इनका डाटा रेट्स आपकी बुक्स में गिवन होगा, नहीं तो यू विल बी डीलिंग विद द डाटा रेट्स। 5 Mbps का आई थिंक इसका डेटा रेट है, इसका 33 Mbps है, इसका 66 Mbps है डेटा रेट। तो डाटा ट्रांसफर रेट जैसे जैसे फास्ट होता होगा उस हिसाब से हम इसका यूसेज करते हैं। अगर स्लो डाटा ट्रांसफर रेट में हमारा काम चल सकता है, विल बी मेकिंग यूज ऑफ ISA स्लॉट्स। अगर उससे ज्यादा स्पीड में हमें काम चाहिए तो we'll be making use of PCI slots. अगर उससे भी ज्यादा चाहिए we'll be making use of AGP slots. Then this is the way ये एक expansion card जो insert होगा। Next is the CPU. It is the main component of any motherboard and is the main processor chip. मेन कंपोनेंट भी है और मेन प्रोसेसर, या कह लो द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर इज इटसेल्फ द सीपीयू। जो दिमाग है, जो मेन है, वो यही है, विच कंट्रोल्स ऑल द इनर फंक्शंस ऑफ द सिस्टम। छोटे मोटे काम जो भी इससे करवाने हैं वो इसकी हेल्प के बिना नहीं हो सकते। तो द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फंक्शंस एज द ब्रेन ऑफ एवरी पीसी। ठीक है, इट इज यूजुअली इंसर्टेड इनटू द सॉकेट। जो हम सीपीयू सॉकेट कल बोल रहे थे ना, उसके अंदर प्रोसेसर पड़ा है, तो ये सॉकेट के अंदर इंसर्टेड है and is not soldered onto the motherboard as many other chips are normally done. बाकी सारे सोल्डर्ड है। सोल्डरिंग का मतलब आई होप आप लोग को समझ लगता है। सोल्डर जो की हुई है उसकी वो सिल्वर लाइनिंग सी है, इसको सोल्डर नहीं Yes, चाहिए, ma'am. अलग से उसके ऊपर प्लेस्ड है, सॉकेट के अंदर प्लेस किया गया है। This makes its replacement in case of any problem very easy. क्योंकि प्रोसेसर के बिना तो उस पूरा का पूरा एक डिब्बा है, ये बॉक्स है, उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है नॉर्मल। ठीक है, इसके टाइप्स भी देखेंगे कौन किस तरह की सॉकेट है। ये देखो इस तरीके का, ये जो प्रोसेसर है इसके ऊपर ये फैन लगा होता है। ठीक है, अब जो सीपीयू सॉकेट है जिसके अंदर हम कह रहे हैं प्रोसेसर को हम इंसर्ट करते हैं या प्लेस करते हैं, ठीक है, वो क्या है? इट इज अ component that provides the mechanical and electrical connection between a microprocessor and a printed circuit board, यानी कि मदरबोर्ड itself। प्रोसेसर और मदरबोर्ड का इंटरेक्शन ये सॉकेट करवा रहा है। मदरबोर्ड की हेल्प से हम वेरियस डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करते हैं, और प्रोसेसर इज द ब्रेन एंड इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज। तो प्रोसेसर अगर मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होगा तभी हम कहेंगे, जैसे हम कहते हैं कि ये कीबोर्ड का पोर्ट है या यूएसबी पोर्ट है, जब हम उसको प्लग करते हैं यूएसबी में, ठीक है, पोर्ट में, तभी वो वर्कआउट करनी शुरू करती है डिवाइस। द सेम इज द केस, प्रोसेसर इज एन इंडिविजुअल डिवाइस। ये एक कंपोनेंट ही है एक तरह से, जैसे आपका माउस हाथ में रख लो, अलग से रख लो, तो दैट इज एन इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट। उसको रेस्ट ऑफ द डिवाइसेस से कनेक्ट करने के लिए मुझे उस माउस को आइदर विद द सीरियल पोर्ट और विद द पीएसटी पोर्ट और विद द यूएसबी पोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन इज अ मस्ट। तो उसका कनेक्शन कैसे है? विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ द पोर्ट्स, PS2 सीरियल और यूएसबी। और ऐसे ये प्रोसेसर का एक हार्डवेयर यूनिट है, हार्डवेयर कंपोनेंट है, और इसको मदरबोर्ड के साथ इंटरेक्शन कराने के लिए दिस सॉकेट विल हेल्प यू, जिसके अंदर वो इंसर्ट होता है। ठीक है, तो द सॉकेट provides all the interaction between the processor and the printed circuit board or the motherboard. ठीक है, अब जो ये
तुम्हारा सॉकेट है, वो आपने पहले पॉइंट सुन लिया कि इसमें रिप्लेसमेंट आसानी से हो जाते हैं, इसलिए हम इसको सोल्डर नहीं करते। जो तुम्हारी सॉकेट है वो दो तरीके की होती है, वन इज पीजीए, वन इज एलजीए, पिन ग्रिड एरे एंड लैन ग्रिड एरे। ये देखो पिन ग्रिड इस तरीके की होती है, सारी की सारी पिन कि तुम्हारे जो प्रोसेसर है उसके ऊपर वो छोटे छोटे से जो होल्स बने होते हैं गोल्डन कलर की, उनमें पिन्स होती है, वो पिन्स इसके अंदर इंसर्ट हो जाती है। ठीक है, एक होती है लैन ग्रिड एरे, इसमें ये देखो ये बॉल फॉर्मेशन के अंदर इस तरीके का सर्किट होता है। यू कैन मेक यूज ऑफ डायग्राम्स इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। अगर इसको हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट, तो दैट विल बी द मेमोरी पार्ट। चलो इसको डिफरेंशिएट करना है, नाम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। मैं तुम्हें कहा इतने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ज्यादा इसकी डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं, सिंपली कैन गो फॉर कि इसमें पिन्स हैं एंड इसमें बॉल ग्रिड एरे है। यू कैन मेक यूज ऑफ दीज टर्म्स एंड यू कैन मेक यूज ऑफ डायग्राम टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। दिस कैन ओनली बी यूज्ड इफ यू विल बी हैविंग सफिशिएंट टाइम एंड स्पेस विद यू। इतनी ज्यादा डिटेल तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या नाम लिख के भी चल सकते हो, दैट विल बी एन create a better impact, yeah, on the examiner. So the next will be the memory part. The memory, it is a place where the computer stores the program and data that help the program in carrying out the operation. कुछ भी है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा था, बेसिक सी बात है, कोई मैं आपको काम कहती हूँ तो तुम पहले अपनी मेमोरी में रखते हो। मैंने कहा कि जाओ मेरा रजिस्टर लेके आओ, तुमने अपने दिमाग में रखा मेरे काम क्या कहा है। मैंने कहा जाओ ये नोटिस बच्चों में बोल के आओ, कुछ भी कह दूं मैं आपको, ये नोटबुक लेके आओ, मुझे नोटबुक सबमिट करा के जाओ, जो भी काम है, आज मुझे सबमिशन मिल जानी चाहिए। ठीक है, अगर आज मैंने कहा कि मुझे सबमिशन मिल जानी चाहिए, तुमने अपने दिमाग में रखा, कल का दिन तुम भूल जाओगे, या आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ वो याद नहीं रहेगा। दिस इज द टेम्परेरी पार्ट। द सेम इज विद कंप्यूटर। अगर हम कंप्यूटर को कुछ भी टेम्परेरी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं टू कैलकुलेट 3+4, देन इट विल बी स्टोरिंग द सेम डेटा और द नंबर्स इन इट्स मेमोरी। So temporary data and the program means what kind of work we have to perform on the data that it will be storing in its memory area. It is used by the computers to run its operating system with the application that you start and is also responsible in loading a system. सिस्टम को लोड करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो रहा है वगैरह वगैरह, वो सारा आपको रैम की जरूरत पड़ेगी या मेमोरीज की जरूरत पड़ेगी, रैम रोम की। मेमोरी यहाँ रेफर कर रहा है रैम एंड रोम बोथ को। The ROM is used for loading up of the system. The type of memory, RAM, random access memory. It is a read-write memory which is used by the processor to keep program data and intermediate results during program execution. इंटरमीडिएट रिजल्ट जो हम कहते हैं ना, ELU, इंटरमीडिएट रिजल्ट कैलकुलेट करके फिर नेक्स्ट में जैसे कुछ भी है 2 + 3 - 4 × 5 कुछ करना है, तो it will be doing one set of operations first, then it will be going for next set of operation, then it will be going for third set of operations, and the temporary results have to be stored. जैसे 2 + 3 मैंने माइंड में रखना है 5, 5 - 1 4, 4 × 5 20. So the temporary results are also stored in the RAM part. It is a volatile memory. Volatile means till the power is available, the contents are available. As long as the power is with you, or we can say the power is not available with you, then the contents will not be available, or you will be lost with the contents. Even if you can regain with the power after some time. तो volatile है, जब तक power है तुम जो लिख रहे हो है, पावर गई दोबारा पावर आई, तुम्हारे कंटेंट्स वो गुम चुके होंगे, चाहे तुम्हारा काम दोबारा स्टार्ट हो जाए। So it is a volatile type of memory which lose its contents when the power supply is switched off. ठीक है, RAM and its types. RAM की मैंने कल भी बताया था, it can be categorized into 2 categories. SIM, single inline memory module.
single inline memory module, DIMM, dual inline memory module. ठीक है, पिंस भी ज्यादा लगेंगे, इनकी स्टोरेज कैपेसिटीज में भी फर्क होगा, तो all you will be having with the difference between SIM and DIMM. So I'll be saying SIM. The SIM can be of 72 pin SIM or 30 pin SIM, or the DIMM it can be of 168 pin DIMM, 184 pin to 40 pin. Because these work in pair, ये pairs में work करती हैं, इसलिए इसके पिन इसके approximately double ही होते हैं, in order to store more amount of data. ठीक है, ऐसे ही DDR 1, 2, 3 टाइप से इसकी जो डिफरेंट वोल्टेजेस पे काम करती है। ये पहले की रैम है, जब छोटी रैम जो होती थी या कम साइज की रैम होती थी वो इस तरीके की होती थी, इस तरह के सॉकेट में ये लगती थी। ठीक है, नाउ दीज विल बी द स्लॉट्स। पहले ये रैम ऐसा स्ट्रक्चर था ऊपर वाला, ये सॉरी कार्ड है। ठीक है, तो दिस इज द सॉकेट जिसके अंदर ये तुम्हारा रैम का स्लॉट या कार्ड इंसर्ट होगा। ये पहले वाली थी। ठीक है, ये ड्यूल के केस में बस डबल साइड हो जाएगी इसकी, जो ये आपको मैंने कल भी बताया था गोल्डन वाले पिंस इस तरीके से दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ मेमोरी, जो हमने अभी डायग्राम में स्टडी किया। द सेम इज विद द installation of RAM on the motherboard can be done in various ways, यानी कि you will be having RAM in different forms. First is the DIP, dual inline pin memory chips were used on initial motherboards, जिनका साइज भी छोटा था और इनकी कैपेसिटी भी कम थी। Later SIM, single inline memory modules became common with large amount of memories. Then currently DIMM, dual inline memory modules are mostly used. Next is the ROM, read-only memory. As the name suggests, this is a read-only memory and the contents cannot be rewritten. It is a non-volatile type of memory. Contents will be remain there even if the power is not available. Means it does not lose its content when the power supply is switched off. A motherboard normally contains one or more ROM chips. एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। This is the form initially again. ठीक है, then is the BIOS, basic input output system. It is a chip that connects your controls all your IO operations of all the devices. Yeah, all the peripherals are instructed by BIOS. Input output को instruction से ये देता है। Single click क्या behavior है वो BIOS ने काम बताना है। It holds a, besides this instruction, it holds a configuration, loading of the operating system, detection of devices, initially जो devices load हो रही है, and monitors the PC temperature. सब कुछ ये काम करेगा। ठीक है, it also provides the communication between processor and the memory. Memory के साथ भी इसका connection है। BIOS के memory is also hardware device, तो हर hardware device को प्रोसेसर के साथ इंटरेक्ट करवाए, आपका काम इसका है कि वो डिवाइस क्या चाहती है, कैसे काम होना है। फंक्शनलिटीज बायोस में है। ठीक है, it prepares the machine so other software programs stored on various media such as hard drive, floppy disk, CDs can load, execute and assume control of computer. हमने कोई फाइल ओपन ही करनी है मान लो हार्ड डिस्क ड्राइव में से, ठीक है, तो डिफरेंट मीडिया के ऊपर अगर कुछ प्रोग्राम्स वगैरह पड़े हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए बायोस ही चाहिए, क्योंकि ओपन इज आल्सो वन ऑफ द फंक्शन टू रीड एंड राइट। तो उसको लोड करना, एग्जीक्यूट करना, कुछ भी करना, वो सारा का सारा बायोस आपको बताएगा। नेक्स्ट इज CMOS,
complementary metal oxide semiconductor. This is basically a real time clock. Okay, this CMOS will give the power to the ROM of your system. This is a lithium battery made up of lithium. Okay, it contains the information about the system configuration such as hard disk type, date, time, order, कुछ भी है. The CMOS battery allows CMOS preserves the setting of BIOS. This is the various form. Next is the chipset. Chipset chips collection. A group of integrated circuits is known as chipset or chips that are designed to work together and are usually made as a single product. A single chip set. Set लग गया ना? Set means a collection of things. तो chips का set is termed as chipset. बहुत सारे chips को इकट्ठा हमने क्लब किया तो that is termed as chipset. Single product बनाने के लिए हम group of integrated circuits को जब क्लब करते हैं तो they are termed as chipset. तो दो ही chipset होते हैं. दो different type of chips को हमने क्लब किया. One is named as North Bridge chipset and other is named as South Bridge chipset. North Bridge. It is also known as the system controller chip. क्योंकि मेन एक्टिविटीज ऑफ द, मैंने कल भी आपको बताया था, नॉर्थ ब्रिज क्या है, फास्टर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है. साउथ ब्रिज क्या है, स्लोअर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है. तो इसको सिस्टम कंट्रोलर बोलते हैं, फास्टर कंपोनेंट्स. द चिप दैट कनेक्ट्स द हाई स्पीड कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम लाइक रैम, एजीपी पोर्ट एक्सेट्रा विद द सीपीयू इज टर्म्ड एज नॉर्थ ब्रिज. तो सिस्टम कंट्रोलर इज द अदर नेम ऑफ नॉर्थ ब्रिज. साउथ ब्रिज की बात करें, इट इज ऑल्सो नोन एज द पेरिफेरल बस कंट्रोलर because it connects the slower components of the system like ISA, ID, USB वगैरह. Peripherals को control करता है. These are the placements of North Bridge and South Bridge. The chipset is the one that connects the microprocessor with the motherboard. Microprocessor ने motherboard के साथ कनेक्ट कर रहे हैं. हम कहते हैं microprocessor is the brain जिसने सब डिवाइसेस का कनेक्ट कैसे करना है, with the help of slots or the ports available on the motherboard. अब slot का इंडिविजुअल काम क्या है? कुछ भी नहीं. मैंने कहा कि मैंने रिलेटेड भी हार्ड डिस्क से रीड राइट करना है. माइक्रोप्रोसेसर ने मुझे बताना है कि कैसे रीड राइट होना है. लेकिन अगर साटा पोर्ट है वो काम ही नहीं कर रहा, या जो हार्ड डिस्क ड्राइव का पोर्ट है वो काम ही नहीं करेगा, तो वो कम्युनिकेशन कैसे होगी? अब हार्ड डिस्क ड्राइव का पोर्ट ने काम कैसे करना है, ये कौन उसको बताएगा? उसका चिप. इस पर्टिकुलर हार्डवेयर डिवाइस से इस तरीके के काम होंगे. ठीक है, तो ऑल द कंपोनेंट्स are connected, are made to be connected with the processor with the help of motherboard or with the help of chipset. All the components present on the motherboard are made to be connected to the processor with the help of chipset. Okay, all the components communicate with the CPU with the help of chipset. चाहे उसको हम सिंपली स्लॉट्स पोर्ट्स की बात करें या हम सिंपली कोई हार्डवेयर डिवाइस की बात करें विद द प्रोसेसर, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इट हैज टू बी डन थ्रू द विद द हेल्प ऑफ चिपसेट. सीधा माउस को प्लग करने से वो माइक्रोप्रोसेसर के साथ वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगा. चिपसेट इज आल्सो द इंटरमीडिएट मीडियम, क्योंकि माउस जिस पोर्ट में इंसर्टेड है, यूएसबी में इंसर्टेड है, तो यूएसबी को काम कौन करवा रहा है? चिपसेट करवा रहा है. तो अगर हम कहते हैं माउस माइक्रोप्रोसेसर के साथ कनेक्टेड है, तो दैट कनेक्शन इज जस्ट बिकॉज ऑफ द चिपसेट. The North Bridge connects directly to the processor via the front side bus. It is a memory controller is located on the North Bridge which gives CPU fast access to memory.
Northbridge also connects AGP, PCI Express bus and memory itself. Memory is also the fastest component. हमें memory से fast access चाहिए, fast data transfer चाहिए. तो ये सारे काम Northbridge की help से हम करते हैं. Southbridge is slower than Northbridge, and the information from the CPU has to go through the Northbridge before reaching the Southbridge. ठीक है. Other buses can connect the Southbridge to the PCI, ID, SATA वगैरह. ये सारे एक कनेक्शन जो Southbridge के साथ है. Next is SATA serial. ATA advanced technology attachment. Okay, it is the interface or the connector that is used to connect the storage device such as hard disk drive or optical drives to the system. This interface connects the secondary storage media to your system. Okay, it is designed to replace the older ATA attachment standards, offering several advantages over older interface. पहले के ज़माने की जो hard disk को उनको replace किया इसने. ठीक है, कैसे रिप्लेस किया, किस फीचर्स के बेसिस पे रिप्लेस किया इसने? केबल साइज रिड्यूस हुआ है और उसकी कॉस्ट. 7 कंडक्टर्स यूज्ड हो रहे हैं इंस्टेड ऑफ 40. इतना लिखने की जरूरत है, सिर्फ नॉलेज के लिए है. लिखना तो फिर उसको घुमा फिरा के कम ही है. ठीक है, केबल साइज की वजह से हमने साटा का यूज ज्यादा कर रहे हैं. हॉट स्वैपिंग वर्ड सुना होगा आपने. ठीक है, द फास्टर डाटा ट्रांसफर थ्रू हायर सिग्नलिंग रेट्स. डाटा ट्रांसफर रेट फास्ट है और एफिशिएंट है ट्रांसफर करने में.